but got good news today that it is not COVID. Negative on COVID. So we have to count our blessings. How many here do not speak English? Okay, how many understand English? Raise your hand. Okay, thank you. So I should begin? And you have your microphone? This lecture is going to be short and sweet. I have to stop at 7:50. Yes? I think that's you kept I will You have time till 9 o'clock. 9? 9 o'clock. Max. Oh. No problem. I thought it was 7:50. You can, Prabhuji, you can give a little introduction, my bio. हरे कृष्णा। तो श्रीमान सिद्धांत प्रभुजी प्रभुपाद श्री प्रभुपाद जी वरिष्ठ शिष्य है। तो हम सबको पता है कि श्री प्रभुपाद जी ने जो मूवमेंट स्थापना किया था 1965 से, उसमें प्रभुजी 1970 में जुड़े थे। तो प्रभुजी जुड़ने से पहले ही अपना करियर फिल्म मेकिंग करते थे, यानी चलचित्र बनाने में उनका खूब रुचि था। और जब उन्होंने 1971 में मिशन प्रभुपाद का मिशन जब ज्वाइन किया, तो उसके बाद 1974 में उन्होंने प्रभुपाद से दीक्षा लिया देखकर कोलोराडो में। उन्होंने सर्वप्रथम प्रभुपाद जी की दिव्य पुस्तकों से सेवा प्रारंभ किया। उन्होंने एक बहुत अच्छे नायिका निभाई यूनिवर्सिटी और कॉलेज में प्रचार का। उन्होंने बहुत अच्छे से प्रवचन दिए सनातन धर्म के ऊपर। 1978 में 1978 सिद्धार्थ प्रभु जी ने नरसिंह प्रभु के साथ इस्कॉन टीवी चैनल में बहुत बड़ा योगदान दिया। उन्होंने वहाँ पे आचार्य सीरीज, रामायण, कृष्ण पपेट शो, द वेजिटेरियन डॉक्यूमेंट्री, हेल्थी वेल्थी एडवाइस, कमिंग बैक रीइंकार्नेशन अमेरिका और बहुत सारे चलचित्रों में उन्होंने विशेष योगदान दिया। अभी पिछले 32 साल से श्रीमान सिद्धार्थ प्रभु जी प्रभुपाद की सेवा में लगे हुए थे और उन्होंने प्रभुपाद स्मृति के ऊपर बहुत अच्छी चलचित्र का सीरीज तैयार किया है, जिसमें 400 से ऊपर उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं अलग-अलग प्रभुपाद के शिष्यों के। उनका ये बहुत बड़ा योगदान रहा है प्रभुपाद स्मृति के पीछे। और उन्होंने और
95 और 95 वीडियोस रिलीज किया है। टोटल मिला के 150 घंटे के उन्होंने चलचित्र बनाए थे प्रभुपाद जी की स्मृतियों के ऊपर और अलग-अलग प्रभुपाद जी की स्मृतियों के ऊपर। अभी श्रीमद सिद्धार्थ प्रभु जी छठवीं पुस्तक है उनकी जो प्रभुपाद स्मृति के ऊपर उस पर उनका कार्य कर रहे हैं। तो हम श्रीमद सिद्धार्थ प्रभु का बहुत हार्दिक स्वागत करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र से बोलिए हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद सिद्धार्थ प्रभु की जय, प्रभुपाद की जय। Namo Vishnupraya Krishna Prasthaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swaminiti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavari Pasidadishtarane Om Jnanatimirandasya Gyananjana Shalakshaya Chakshurunmitatam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. So thank you all for coming, and again my apologies for the quality of my voice. Just coming off a head cold, so I hope you can tolerate. So this project of collecting oral histories of Srila Prabhupada is very essential to the history of Krishna consciousness in the West. As the six Goswamis wrote about Lord Chaitanya's pastimes, is for our benefit, so we can know about Lord Chaitanya, his qualities, the lessons that he's taught us. Very similar, going back to the oral histories of the time of Jesus. Okay. Yeah, sorry, I forgot. पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे हम देखते हैं कि ये जो सेवा है प्रभुपाद की स्मृतियों पर चलचित्र बनाने की, वो बहुत महत्वपूर्ण सेवा है। और ये मैंने इनका जो सेवा है उसके बहुत जो महत्वपूर्ण सेवा है उसकी जिम्मेदारी मैंने ली है। And so similarly, the importance of oral histories we can see in the Christian and Judaic cultures, how the disciples of Jesus wrote down his lessons and his qualities of purity. We know he's a son of Krishna. He's a pure devotee. So in the same light, Srila Prabhupada came to us to America in 1965. And these oral histories will also give us an understanding of Srila Prabhupada's lessons that he's taught us, as well as the qualities that he exhibited when he was on the planet, for our guidance to develop these qualities for ourselves. तो हम देखते हैं कि जैसे जीसस क्राइस्ट भगवान के पुत्र थे, उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, वैसे प्रभुपाद जी यहाँ पे आए सनातन धर्म का प्रचार करके। और हम देखते हैं प्रभुपाद जी अपने स्वयं के आचरण से बहुत सारे गुण को प्रदर्शित किया जो महत्वपूर्ण है। So this is the importance of collecting these interviews that I've collected over the last 32 years for our benefit. We know that Srila Prabhupada was actually sent here by Krishna. From one of my interviews, it was described how in a very rare situation where Prabhupada actually spoke about the time that Krishna spoke to him and he spoke to Krishna. तो मैं पिछले 32 साल से प्रभुपाद के अलग-अलग शिष्यों को मिलके उनकी स्मृति के ऊपर चलचित्र बना रहा हूँ। और हम देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद जी को स्वयं कृष्ण ने भेजा था प्रचार करने के लिए। और मैंने ये अलग इंटरव्यू में जब मैं ले रहा था तो मैंने स्वयं ये महसूस किया है, अनुभव किया है। Thank you. Great job in translating
Let's give a round of applause. Thank you. The story is that Srila Prabhupada in the spiritual world was told by Krishna himself, he said, I want you to go down and write those books. तो हम देखते हैं श्री प्रभुपाद एक जगह बताते हैं कि भगवान कृष्ण ने स्वयं ने बताया कि आप जाइए और मेरे बारे में पुस्तक लिख के आइए वापस. And Srila Prabhupada said, I do not want to go to that place. श्री प्रभुपाद बता रहे थे कि मैं नीचे नहीं जाना चाहता, पृथ्वी पर ऊपर मैं नहीं जाना चाहता. And Srila Prabhupada said that Krishna told him, he said, do not worry, I will take care of everything. और वहाँ पे भगवान कृष्ण बताते हैं श्री प्रभुपाद जी को कि आप चिंता मत कीजिए, मैं आपकी रक्षा करूँगा. And when Srila Prabhupada said that, his lip kind of curled up in disdain. He said, I don't want to go to that miserable place. And then Krishna said, do not worry, I will take care of everything. प्रभुपाद जी बहुत दृढ़ भावना से यहाँ पे बोल रहे थे कि मुझे दुखालय जगत में नहीं जाना है. पर कृष्णा वापस उनको बताते थे कि आप चिंता मत कीजिए, आप जाइए, मैं आपकी रक्षा करूँगा. So, Srila Prabhupada, of course, surrendered. इसलिए प्रभुपाद कृष्णा को सरेंडर हो गए, शरणागत हो गए. For our benefit. हमारे लाभ के लिए. It can also be explained that, as Prabhupada described, that his teachings and his writings will be the law books for the next 10,000 years. प्रभुपाद जी बताते हैं कि उनकी जो पुस्तक है वो कलियुग में 10,000 वर्षों के लिए नियम कानून की जैसी किताब होती है, वैसे नियम की ये पुस्तक होगी. So therefore his life and his teachings are also there for our benefit for the next 10,000 years. तो उनके जो जीवन है और उनकी जो शिक्षा है वो हमारे लिए लाभ है 10,000 साल आने वाले 10,000 साल वर्षों के लिए. And why should we focus on Srila Prabhupada? Because Krishna stated in the Bhagavatam that actually he is more pleased when his devotees are glorified. तो हमें श्री प्रभुपाद की शिक्षा और उनके जीवन के ऊपर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि भागवत में बताया जाता है कि जब हम भक्तों की प्रशंसा करते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं. So, when we learn about Prabhupada's teachings and his qualities, again, this will be our barometer for ourselves and how we are advancing in our own Krishna consciousness. जब हम प्रभुपाद जी की शिक्षा के बारे में चर्चा करते हैं, उनके जीवन पे ध्यान देते हैं, तो हम स्वयं समझ सकते हैं कि हम भक्ति में कितना आगे बढ़ रहे हैं. Even materially speaking, excuse my voice, in a mundane situation, even with men and women, boys and girls, we can develop love for the other person the more we know about them. We develop knowledge about their personality, their sense of humor, their kindness, their character, and in this way do we develop attachment and love for that other person. तो हम भौतिक दृष्टिकोण से अगर देखें तो हम समझ सकते हैं कि अगर पुरुष को स्त्री से प्रेम है तो पहले वह स्त्री के बारे में जानने का प्रयास करता है. Just like in the Krishna book, Srila Prabhupada actually, in the beginning of the Bhagavatam, he describes how we should read the Bhagavatam from the beginning straight through, not jump over to the 10th canto. तो हम कृष्ण बुक में देखते हैं कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें भागवत क्रमशः पढ़ना चाहिए, डायरेक्ट 10वें स्कंद पे हमें छलांग नहीं लगानी चाहिए. But in reality, Srila Prabhupada, and I'm speculating a little bit, presented the Krishna book in the very early days, maybe only after translating maybe three cantos. पर हम देखते हैं श्री प्रभुपाद के जीवन में श्री प्रभुपाद की जो कृष्ण पुस्तक है वो भागवत के 3 स्कंद छपा के बाद ही कृष्ण पुस्तक को लिख दिया है.
And one might ask, well, why is he doing that in opposition to his instruction not to jump over the other cantos before we read about Krishna's pastimes? जब शिष्य ने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद जी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप खुद बताएं कि 10वें स्कंद पे डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी है और आप अभी खुद कृष्ण पुस्तक पहले दे रहे हैं. And the reason Srila Prabhupada gives for that is that he knew he had a limited time on this planet and wanted to make sure that we in the Western world and in India, the East as well, can understand sooner than later that Krishna is a person to destroy the Mayavadi philosophy. तो हम देखते हैं इस स्वरूप पर वहाँ पर बताते हैं कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन अभी सीमित समय है मेरे पास और कृष्णा पुस्तक ही है जो मायावाद दर्शन को नाश कर सकता है. And so, by reading the Krishna book, we read about pastimes that Krishna had when he was on the planet and his qualities and his character. So similarly, when we learn about these things about Krishna, we develop our love for him because we know more about him as a person. And this is then to help us develop our love because Krishna is a person. तो हम जब कृष्ण को पढ़ते हैं हम उनके विशेष गुणों के बारे में और उनके चरित्र के बारे में समझते हैं और उनके प्रति प्रेम जागृत करते हैं. There's one story from the memory series. First of all, has anyone seen the collection of my interviews? Few, okay. So, y'all have internet at home? आपके पास इंटरनेट है घर पे. So, if you go to youtube.com and then in the search engine you type in Prabhupada Memories, you'll go to my channel and you can see 90% of what I've produced. And you'll be inspired, God willing, to hear and learn more about Srila Prabhupada. तो अगर आप YouTube पे जाएंगे वहाँ पे और श्रील प्रभुपाद मेमोरीज टाइप करेंगे तो आपको 90% कंटेंट वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे उपलब्ध है और वहाँ पे आपको प्रभुपाद जी की स्मृतियाँ पढ़ के काफी प्रेरणा प्राप्त होगी. So, just for our own memory, in case you're not writing this down, let's just say it all together. The channel that we're going to search on YouTube is Prabhupada Memories. Can we all say it together? Prabhupada Memories, okay? तो YouTube पे हमें सर्च करना है प्रभुपाद मेमोरीज. एक बार मेरे से बताइए प्रभुपाद मेमोरीज. Thank you. So one of the stories in relationship to what we've been talking about, one of the stories in the series is a lecture that Srila Prabhupada gave in Mexico City. बहुत सारी कहानियां हैं, उसमें से एक कहानी है जिसमें श्रील प्रभुपाद मेक्सिको सिटी में लेक्चर दे रहे हैं. Srila Prabhupada gave a Sunday feast lecture where he was describing how, from the Bhagavad Gita, Krishna describes how if one thinks of him at the time of death, that person will attain him. तो हम वहाँ पे सुनते हैं कि श्री प्रभुपाद जी भागवत में चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अंतकाल पे जो मृत्यु के समय स्मरण करेंगे वही हमारी गति होगी. At the end of the class, they opened it up for questions and answers. क्लास के अंत में वहाँ प्रश्न उत्तर के लिए प्रारंभ करते हैं चर्चा. A lady from the audience, she was not an initiated devotee, she raised her hand. Srila Prabhupada called upon her and she asked Srila Prabhupada a question. जो ऑडियंस है उसमें एक स्त्री हाथ करती है, आगे आगे श्री प्रभुपाद जी को प्रश्न पूछती है. She said, Swamiji, you've been talking about how if we think of Krishna at the time of death, we will attain him in the spiritual world. Srila Prabhupada said, yes. Then she said, well, what happens if I think of you at the time of death? Will that have the same effect?
तो वहाँ पे वह महिला पूछती है, स्वामी जी आपने बताया कि मृत्यु के समय जो भी हम स्मरण करते हैं वही प्राप्त होता है। अगर हम कृष्ण का स्मरण करते हैं हमें कृष्ण प्राप्त होते हैं। श्री प्रभुपाद जी, अगर मैं आपका स्मरण कर दूंगी क्या गति प्राप्त होगी? Srila Prabhupada closed his eyes for a couple of seconds, opened his eyes and said, and smiled, yes, that will have the same effect. Very nice. तो वहाँ पे श्री प्रभुपाद जी थोड़े क्षणों के लिए अपनी आंख बंद करते हैं, फिर आंख खोल के स्माइल करके मुस्कुरा के बताते हैं कि हाँ, आपको भी कृष्ण ही प्राप्त होगा अगर आप मेरा स्मरण करोगे तो। So, we should not take Srila Prabhupada for granted. तो हमें श्री प्रभुपाद को सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। I will tell you the first time that I was in Srila Prabhupada's presence. I was in Dallas, Texas in 1972. तो श्री प्रभुपाद जी को मैं पहली बार टेक्सास डैलस में 1972 में भेंट हुई थी। It was a Sunday feast lecture. We had taken Srila Prabhupada from the airport to the temple in Dallas. And Srila Prabhupada gave a lecture about the benefit of chanting the Hare Krishna Mahamantra. तो वो एक रविवार का संडे फीस्ट लेक्चर था। हम श्री प्रभुपाद को एयरपोर्ट से मंदिर लेके आए और वहाँ पे जप के लाभ के बारे में City, they opened it up for questions after the lecture. और वैसे ही वहाँ पे भी प्रवचन के बाद उन्होंने प्रश्नोत्तर के लिए प्रारंभ किया था। The first gentleman raised his hand and he, in a somewhat challenging mood, said to Srila Prabhupada, well, you've been talking about the benefit of chanting Hare Krishna, but what do you feel? He pointed right at Prabhupada. What do you feel when you chant Hare Krishna? तो एक जो व्यक्ति था उन्होंने प्रभुपाद को चैलेंजिंग मूड में प्रश्न किया कि आप जब करने के अलग लाभ बता रहे हैं, पर आपको क्या महसूस होता है जब आप जब करते हैं? Without hesitation, in a matter of a heartbeat, Srila Prabhupada sat back on the Vyasasana and said, I feel no fear. एक क्षण भी रुकते हुए उन्होंने तुरंत जवाब दिया कि मुझे कोई भी भय नहीं लगता जब मैं जप करता हूँ। So that is the essence of chanting the Mahamantra. तो ये जप करने का सार है निर्भयता। I myself at that time was in a state of fear. It was in the time of the Vietnam War, and I was in anxiety about going to a war that I did not believe in, that I could be killed. प्रभु जी बताया कि वो वियतनाम वॉर के बीच में ये जो चल रहा था उसमें काफी भयभीत थे और वो स्मरण कर रहे थे कि कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती है। So when Srila Prabhupada said, I feel no fear, it was not a matter of the mind thinking about that, but when he said it and the way he said it with such conviction that I knew that it was the absolute truth, and that I knew then that Srila Prabhupada and Krishna were like this. तो मैंने जब श्री प्रभुपाद का प्रवचन सुन रहा था तो मैं स्पष्टता से महसूस कर पा रहा था कि श्री प्रभुपाद जब बता रहे थे मैं निर्भयता महसूस कर रहा हूँ, तो मुझे पूरा स्पष्ट हो गया कि परम सत्य की सत्य से निर्भयता प्राप्त होती है। So the lesson there is that we as citizens of the material world, we're always going to have some anxieties. This is the place of misery, a place of anxieties. And the heart wants to go to the place where there is no anxiety. It's called Vaikuntha, without fear. तो हम देखते हैं भौतिक जगत में सभी लोग चिंताओं से पीड़ित हैं और हमारा हृदय वहाँ पे जाना चाहता है जहाँ पे कोई भी चिंता नहीं है, वैकुंठ। So if we just take that one lesson and realize that anytime we are feeling some type of anxiety or fear, lack of money, lack of love, whatever the fear is, this is the solution. And not just to chant Hare Krishna blindly, but to hear the sound vibration
of the Hare Krishna Maha Mantra go out your mouth and back into your ear. तो मुझे ये एक शिक्षा प्राप्त हुई वहाँ पे कि जब भी हमें भयभीत या चिंता से ग्रस्त होते हैं तो हमें जप करना चाहिए और केवल जप नहीं करना चाहिए, जो भी हम जप कर रहे हैं उसे एकदम ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए. As Krishna describes in the Gita, the mind is like the wind. It is very hard to control. जैसे कि कृष्ण बताते हैं भगवद गीता में कि जो मन है वो वायु के समान है और नियंत्रण करना उसे बहुत कठिन है. So our advancement and ability to live without fear and thus to live a happy, conscious life is to control the mind to simply shut up and listen to these names of Krishna. तो अगर हम आनंद जीवन जीना चाहते हैं तो हमें जप करना है और जप करते समय हमें ये समझना है कि मन कुछ भी बोलकर बताना है कि चुप कर मन और हरे कृष्ण महामंत्र को सुन. And not just mechanically, but with feeling, with an attitude, as Prabhupada describes, to chant as though you're a child crying out for his mother. Mommy, mommy! It's that feeling that we have to chant Krishna's name with that attitude. तो हमें बस एक मशीन तरह जप नहीं करना है, हमें पूरे हृदय से भावनापूर्वक जप करना है, जैसे कि पुत्र अपनी माता के लिए रोता है, मम्मी मम्मी. In Denver, I was a Bhakta leader at one time, and it was my duty to make sure all the new devotees that were coming were chanting properly. तो उस समय मेरी सेवा थी कि देखना कि सब जो भक्त हैं वो अच्छे से जप कर रहे हैं कि नहीं. And there were many times where I would be hearing Hare Nish, Hare Nish, 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 Hare Hare. And I'm thinking, is there a Nish Loka? And I don't think so. So we have to be able to hear our rounds and not be lazy to enunciate Krishna's names. It is so potent. कभी-कभी मैं देखता था कि भक्त अच्छे से जप नहीं कर रहे और कृष्ण नाम का उच्चारण अच्छे से नहीं कर रहे, निश निश ऐसा करके जप कर रहे हैं, वैसे कोई श्लोका नहीं है. तो हम जब जप करते कृष्ण नाम स्पष्टता से लेना है. So that's my preaching for the day. And now I'm going to tell you some anecdotes that show a lighter side to Srila Prabhupada as opposed to the guru on the Vyasa-san. तो अभी मैं प्रभुपाद जी के कुछ अच्छे जो मेरी स्मृतियां हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा जिन पे उनको साक्षात व्यास में सुन रहा था. So these stories will give some example as to Srila Prabhupada's wit and humor. And will give us a lighter side of Srila Prabhupada because he is a person and he has so many aspects to his character and his personality that this will give us the lighter side of Srila Prabhupada's character. तो ये जो स्मृतियां हैं, ये जो कहानियां हैं, उसमें हम देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद का जो चरित्र है उसमें उनके पास कितनी हंसमुखता है और वो कितने सामान्य रूप से व्यवहार करते थे. In the early days in San Francisco, Garuda Das Prabhu told me that a Mataji came up to Srila Prabhupada तो मैं एक सैन फ्रांसिस्को में बहुत पहले की घटना है, ये एक महिला प्रभुपाद जी के पास आई. and she said to Srila Prabhupada, this was the early days, so Prabhupada was addressed as Swamiji. So she said, Swamiji, you look so nice today. And Srila Prabhupada said, just today? तो ये बहुत पहले की घटना है, तो प्रभुपाद जी को सब वहाँ पे स्वामी जी करके संबोधित करते थे. तब उन्होंने माता जी बताया कि स्वामी जी आप बहुत अच्छे लग रहे हैं आज. प्रभुपाद जी का आज भी कैसे अच्छा लग रहा हूँ. Another time Srila Prabhupada was in the UK and they were driving around. Hare Krishna. Thank you. Excuse me.
By the way, I've been able to survive these last few days because of Madhavila. मैं पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे अच्छे से जी रहा हूँ उनकी माधी माता जी Madhavilata. So my thanks to you. माधी माता जी को मेरा हृदयपूर्वक धन्यवाद है। So Srila Prabhupada was in the UK and driving around in a car with his disciples, and Sri Bhuvanath Prabhu was in the car, and he told me this story. तो ये तब की घटना है जब मैं श्री प्रभुपाद जी को यूके गाड़ी में ले जा रहा था और उनका एक शिष्य बैठे हुए थे, तो त्रिभुवनानंद दास करके उनके शिष्य हैं, वो उनसे चर्चा कर रहे हैं। Sri Bhuvanath told me they were driving past Buckingham Palace, and and Sri Bhuvanath saw the guards. You know, they have the big, furry, big, tall hats. त्रिभुवनानंद प्रभु जी बता रहे थे श्री प्रभुपाद जी को भक्ति वेदांत पैलेस में लेके जा रहे थे, और वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड है वो बहुत बड़े-बड़े, उनकी बहुत बड़ी टोपी थी, बहुत बड़ी टोपियाँ पहनी थी उन्होंने। And that reminded Sri Bhuvanath that they had just made, one of the palace guards had just become a disciple, had surrendered. And Sri Bhuvanath said to Prabhupada, Srila Prabhupada, one of the Queen's guards has joined the temple. त्रिभुवनानंद महाराज ने जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि यहाँ के जो पैलेस गार्ड में एक गार्ड है वो आपका शिष्य है और उन्होंने मूवमेंट को ज्वाइन किया है। Srila Prabhupada said, oh, so what about the Queen? श्री प्रभुपाद जी बताया तो गार्ड जानते हैं तो जो क्वीन है, जो महारानी है, उनका क्या है? Another example of Srila Prabhupada's personal nature. A devotee named Hamsaduta Das. Do you know Hamsaduta? You heard of Hamsaduta? Hamsaduta told me that he's from Germany, or he was, he's no longer with us. But his parents gave him the name Hans Carey. तो हमसुदूत प्रभु एक शिष्य है श्री प्रभुपाद जी के, हमसुदूत प्रभु बता रहे थे कि उनकी जो माता ने उनको नाम दिया था And Hamsaduta said, I didn't like my name. And he wanted a spiritual name, so that's one reason why he joined the movement, so that he would get a spiritual name and not have to carry around the name Hans Carey anymore. तो हमसुदूत प्रभु बता रहे थे कि मुझे नाम बिल्कुल पसंद नहीं था और मैं आध्यात्मिक नाम चाहता था, इसलिए मैंने ये मूवमेंट को ज्वाइन किया। So at his initiation, just before the initiation, he was thinking, you know, in those days, and I think maybe sometimes today, that Prabhupada gave a spiritual name with the first letter of that new spiritual name as the same letter that the birth name was given. तो पहले ये विधि थी कि प्रभुपाद जी जो आध्यात्मिक नाम देते थे वह वही पहला अक्षर होता था जो उनका भौतिक नाम है। So he was thinking, okay, my name is Hans, so I'm going to get Hanuman Das or Haripad Das or Hari Das. तो वह सोच रहे थे कि मेरा नाम हंस कैरी है तो मुझे हनुमान दास या हरिपाद दास या हरिदास ऐसा नाम मिलेगा। So when Srila Prabhupada handed him his beads, he says, your name is now Hamsaduta Das. जब श्री प्रभुपाद जी दीक्षा के समय माला दे रहे थे तो उन्होंने बताया आपका नाम है हमसदूत दास। So he said, he was disappointed. He said, Hans, I still have Hans. I don't like that name. तो हमसदूत प्रभु बहुत निराश हो गए और सोच रहे थे कि मेरे नाम में अभी हंस है, मुझे वो नाम बिल्कुल पसंद नहीं है। And not only the Hans was there as the prefix, but he was married, so he was Hamsaduta Hara Carey. Hans Carey. He had the Hans and the Carey at the front and the end of his spiritual name. तो वो हंस नाम नहीं था, हमसदूत नाम था।
Adhikari. हम स्तुत कैरी हैं। Yeah. So he was obviously disappointed. So the next day, he went into Srila Prabhupada's room to ask him, well, who is Hamsaduta? He had not read that name before. And Srila Prabhupada said, I don't know. तो वहाँ दूसरे दिन श्री प्रभुपाद के रूम में जाते हैं और पूछते हैं कि हमसुदूत कौन है, मैंने ये नाम पहले नहीं सुना। श्री प्रभुपाद बताते हैं मुझे नहीं पता। And then a couple of days later, he was still frustrated. He wants to know what the meaning of his name is. So again, he went into Srila Prabhupada's room and said, Srila Prabhupada, where can I find the meaning of my name? तो बहुत दिन तक वो निराश थे और उन्होंने वापस एक बार प्रभुपाद जी के पास गए और उनसे पूछा कि कहाँ पे मैं प्राप्त कर सकता हूँ कि मेरे नाम का अर्थ क्या है। Srila Prabhupada said, in the Srimad Bhagavatam. श्री प्रभुपाद बताया श्रीमद् भागवतम के अंदर। And even at that time, the 1, 2, 3 cantos were out, so he had no direction where to find the meaning of Hamsaduta. तो वहाँ तब की बात है कि एक या दो स्कंद छपे हुए थे और उनको पता नहीं था कि कहाँ वो ये नाम का अर्थ प्राप्त करेंगे। So he let that go, and then a couple years later, Srila Prabhupada was in Montreal. तो ये घटना के बाद कुछ सालों के बाद श्री प्रभुपाद जब मॉन्ट्रियल में थे, And there was a darshan. It was an intimate situation with Srila Prabhupada and a number of his disciples in the room surrounding Srila Prabhupada. और तब दर्शन का समय हो चुका था। श्री प्रभुपाद जी विशेष दर्शन थे, सभी शिष्य उनको घिरे हुए थे। So Srila Prabhupada was looking at his disciples and musing upon each one and saying, oh, Krishna Das, that means this, and Sukadev, that means this and that. So he ran around the room describing the definition of each of the disciples that he initiated. तो वहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे थे अलग-अलग शिष्यों के नाम का अर्थ क्या है। कृष्णदास आपके नाम का अर्थ ये है, सुखदेव दास आपके नाम का अर्थ ये है। So Hamsaduta thought, oh, now here's my chance. I'll get to finally find out the name, the meaning of my name. तो हम सब प्रभु सोच रहे थे कि अभी So Hamsaduta said to Srila Prabhupada, who is Hamsaduta? तो हम सब प्रभु ने श्री प्रभुपाद को प्रश्न किया, श्री प्रभुपाद ये हमसुदूत का अर्थ क्या होता है? Srila Prabhupada said, you are. तो जब उन्होंने प्रश्न किया हमसुदूत कौन है? श्री प्रभु ने कहा कि आप हमसुदूत हो। So this was Srila Prabhupada's sense of humor. Not only his sense of humor, but his being personal with his disciples. That he was not just the teacher, but he was a friend to every living entity. What to speak of his disciples. तो हम ये घटना से देख सकते हैं कि श्री प्रभुपाद का कितना हंसमुख व्यवहार था और अपने हर एक शिष्य का कितना व्यक्तिगत व्यवहार उनका आचरण का प्रदर्शित कर रहे थे। और श्री प्रभुपाद जी सिर्फ एक शिक्षक नहीं थे, पर सभी जीवों के वह सुरत थे। Do you all know who Jamuna Devi Dasi is? आप सबको पता है जमुना देवी दासी कौन है? How many don't know who Jamuna is? Everybody, okay. So she joined with her boyfriend, and they became married, Guru Das, in San Francisco. But before they could get married, they had to get initiated. And then after they were initiated by Srila Prabhupada, then he performed the wedding ceremony. तो जो जमुना देवी दासी का विवाह संस्कार से पहले उनका दीक्षा संस्कार था और दीक्षा संस्कार के बाद जब वहाँ विवाह संस्कार विधि कर रहे थे तब So, you know, in a fire sacrifice, they have the sticks, the wood, and they dip it in the ghee, and that makes the fire grow.
हम देखते हैं यज्ञ की विधि में लकड़ियां है उसको घी में डुबोकर फिर अग्नि में समर्पित किया जाता है। But at their wedding ceremony, they did not have ghee. They only had margarine. Margarine, it's fake butter. तो देखते हुआ विवाह संस्कृति विधि के दौरान उनके पास घी उपलब्ध नहीं था और जो फेक घी होता है मार्जिन नाम का वो उपलब्ध था। So when Srila Prabhupada dipped the stick, the wood, into the margarine and it tried to light it, it went तो श्रील प्रभुपाद जी ने वहाँ जो लकड़ियाँ थी उनको लेकर हम मार्जिन में डुबोकर जलाने का प्रयास किया पर वो जल नहीं रही थी। So Srila Prabhupada noticed that it was not catching fire, and Srila Prabhupada said, "Oh, this marriage will have a very slow start." तो जब श्री प्रभुपाद ने अनुभव किया कि नदियाँ जल रही तो श्री प्रभुपाद ने बताया कि ये जो आपका विवाह है उसमें काफी धीरे से गति प्रारंभ होगी, धीरे चलेगा ये जो विवाह संस्कार। And Jamuna, during the interview, when I interviewed her, her response to Prabhupada's description that marriage will have a slow start, she said, "Oh, what have I gotten myself into?" तो जीवन देवी दासी जो है वो इंटरव्यू के दौरान बता रहे थे कि प्रभुपाद ने बताया कि आपकी जो विवाह है वो बहुत धीरे से प्रारंभ होगा, तो बोले कि मैं कहाँ फंस गई। But they did have a good marriage. पर उनका जो विवाह है वो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ, उनका जो जीवन विवाह जीवन बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। Another time, Srila Prabhupada was in New Vrindavan, and there were many hooligans there. You all know what hooligan? Miscreants. एक बार शिव जी वृंदावन में थे और वहाँ पे बहुत अपराधी होलीगन करके अपराधी थे, वहाँ पे बहुत सारे उनका प्रचलित होता था। And there were people that had rifles and guns, and they were shooting them off and making a disturbance to the devotee community in New Vrindavan. और ये दंगित लोग हैं, अपराधी हैं, उनके पास बहुत बड़ी-बड़ी बंदूकें रहती थी और And so the devotees with Srila Prabhupada, they're determined that Srila Prabhupada needed a bodyguard. तो उनको लग रहा था कि श्री प्रभुपाद जी को एक रक्षक की आवश्यकता है। So they picked a devotee out to be the bodyguard, but it was very difficult for one person to stay up 24 hours a day to be the bodyguard. तो उन्होंने एक रक्षक की व्यवस्था की श्री प्रभुपाद जी के लिए, पर एक रक्षक काफी नहीं था 24 घंटे श्री प्रभुपाद की रक्षा करने के लिए। So when Srila Prabhupada came to Los Angeles, they realized that they cannot just have one disciple be the bodyguard, so they're going to have 3 disciples, split up the 24 hours into 3 segments. जब वह लॉस एंजलिस में पहुंचे तो उनको समझ में आया कि श्री प्रभुपाद जी के लिए एक रक्षक काफी नहीं है, तो उन्होंने 3 रक्षक की व्यवस्था की, 8-8 घंटे की रक्षा करेंगे श्री प्रभुपाद की। So the devotee that told me this story, his name is Vamana John. तो जो ये भक्त मुझे बता रहा था उनका नाम है वामन जय। And he and his friend Bhaskar, they were friends together before they joined the movement, and so each one of them had an 8-hour shift. तो उनके मित्र थे जिनका नाम था भास्कर, तो ये और जो प्रभु जी है वो 8-8 घंटे प्रभुपाद जी की रक्षा करते थे। And Vamana John told me that Bhaskar told him, he said, "You know, Srila Prabhupada's daily routine, you could set your watch. Prabhupada got up at a certain time, he chanted at a certain time, he went on a morning walk at a certain time, Bhagavatam class at a certain time, very regulated." तो ये जो वामन जी है वो बता रहे थे श्री प्रभुपाद का जो दिनचर्या है उसमें जो जप करने का समय है, उठने का समय है, सोने का समय है, तो पूरा फिक्स था।
So Vamanajan said, yeah. So then Bhaskar told him, he said, well, you know, I noticed that when Srila Prabhupada comes back from his morning walk, he takes his slippers off at the edge of the door before he enters the temple room. तो जब श्रील प्रभुपाद सुबह का जो मॉर्निंग वॉक है वह कंप्लीट करके आते थे तो मंदिर में आने से पहले वहाँ एक कोने में अपनी जो स्लीपर है उनको उतारते थे. And when he finishes the class, he puts his slippers back on, walks up the stairs, takes his slippers off before he enters his quarters. And he said, and because of that, I have bought a pair of slippers, the exact same style and size as Srila Prabhupada's slippers. तो वह समझ रहे थे कि श्रील प्रभुपाद जो चप्पल उतारते थे भागवत कक्षा लेने के बाद वही चप्पल वापस पहन के ऊपर जाते थे और रूम में एंटर होने से पहले वह चप्पल वहाँ पे उतार देते थे. तो मैंने उनके लिए वैसे ही चप्पल की एक और व्यवस्था कर दिया. So Vamanajan said, but you're taller than Prabhupada. Your feet are not the same size. Why do you want to get slippers the same size? तो आपको वैसी चप्पल क्यों चाहिए जिस श्रील प्रभुपाद के साइज की है? Excuse me. Bhaskar said, well, the next morning, when Prabhupada comes in from the morning walk and takes his slippers off before going to the temple room, I'm going to exchange the new slippers that I bought for Prabhupada's slippers. And then when he comes after class, he's going to put the slippers that I bought, walk up the stairs, take the slippers off, and then when he goes into his room, then I will exchange again his original slippers, and I will take the slippers that I bought, and I will have a pair of slippers that Srila Prabhupada wore at least one time, and I will have Mahaprasad. तो वामन जी जब उन्होंने पूछा तो बताया कि जब श्रील प्रभुपाद कक्षा के पहले जो चप्पल उतारते हैं तो मैं वह चप्पल जब उतारते हैं तो वह चप्पल मेरी जो नई चप्पल मैं एक्सचेंज कर दूंगा और वह जो चप्पल पहन के ऊपर जाएंगे अपने रूम में और वापस जब चप्पल उतारेंगे तो मैं उनकी जो पुरानी चप्पल वहाँ पे रख के जो मैं नई चप्पल दिए हैं उनको महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा. Vamanajan said, wow, that sounds like a good idea. तो वामन जी प्रभु ने बताया कि ये बहुत अच्छा विचार है. Let me know where you get them so I can buy my own, and I'll do the same thing. तो वामन जी मुझे बोला कि मैं भी एक चप्पल लेके आऊंगा और मैं भी वैसे ही करूंगा. So the next morning, Vamanajan comes to Bhaskar and says, okay, well, where do I buy my shoes? Where do I buy my slippers? तो जब दूसरे मॉर्निंग वामन जी प्रभु चप्पल बदलने से उतरती थी. So, Bhaskar, you want me to? तो वामन जी प्रभु बता रहे थे पूछ रहे थे वो कि जो नई चप्पल है मुझे कहाँ से खरीदनी है. So Bhaskar said to Vamanajan, he said, no, you shouldn't do it. And Vamanajan said, well, you got yours, you just want to hoard the prasad for yourself. तो भास्कर प्रभु ने बताया कि आपको नई चप्पल लेने की जरूरत नहीं है. तो वामन जी प्रभु ने बताया कि आप प्रसाद सिर्फ अपने लिए रखना चाहते हैं. And Bhaskar said, no, I'll tell you what happened. He said, Prabhupada came, took his slippers off before the temple room. After class, he came out. After I switched my slippers with Prabhupada's original slippers, Prabhupada slipped on my slippers, walked up the stairs, and walked right into his room without taking his slippers off. तो मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ कि मैंने जब नई चप्पल रखी वहाँ पे उसके ऊपर भागवत कक्षा खत्म करके आए मैंने नई चप्पल पहनी और इस बार मैंने चप्पल नहीं उतार के वो रूम के अंदर चप्पल पहन के चले गए. Vamanajan said, oh my gosh, what did you do? तो वामन जी प्रभु ने बताया कि फिर आपने क्या किया. Bhaskar said, well, I didn't know what to do. I just stood out there chanting Hare Krishna, Hare Krishna. मुझे पता नहीं क्या करना चाहिए इसलिए मैं वहाँ पे खड़े होकर बस जप कर रहा था. After a few minutes, Prabhupada's sannyas secretary came out and said, is your name Bhaskar? कुछ क्षणों के बाद प्रभुपाद जी के जो शिष्य थे वो बाहर आए और उन्होंने पूछा कि क्या आपका नाम भी भास्कर है. Bhaskar said, yes. बहुत चिंताग्रस्त होकर बताया कि हाँ मेरा ही नाम है. Prabhupada's secretary, the sannyasi, said, well, Srila Prabhupada has a message for you. तो प्रभुपाद जी जो सन्यासी शिष्य ने बताया कि श्री प्रभुपाद
आपके लिए एक मैसेज ड्रॉप किया है। So Bhaskar nervously listened, and the sannyasi said, "Number one, thank you very much for the new slippers. पहला ये था उनका संदेश कि बहुत धन्यवाद आपके नए चप्पल के लिए। And secondly, you may keep the old slippers. और दूसरा संदेश था वो था कि आप जो पुराने चप्पल वो रख सकते हो अपने पास। But more importantly, it is not nice to play tricks on the spiritual master. पर सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि हमें जो गुरुदेव है, श्री प्रभुपाद है, उनके ऊपर ऐसे नहीं करना चाहिए। So we can just stop there now. Maybe we can answer any questions if any come to mind. तो मैं यहाँ पे अपने प्रवचन को विराम दूंगा। कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Hare Krishna, bro. You just said that you recorded all those Prabhupada memories, right? So even I do a little bit of videography. So I have a question for you. Was that when you heard the interviews, so did you do the proofreading also, or you took the things that they were saying on face value? Because I think later, many hundreds and thousands of years later also, your videos will be watched. So how did you go about deciding that if you should proofread, or you should verify what's being recorded, or you should just believe that what they're saying? Good question. You want to repeat the question? तो उनका प्रश्न है कि आप जब प्रभुपाद की स्मृति के ऊपर चलचित्र बना रहे थे, तो आपने क्या उन चलचित्र में जो खामी थी उनको सही किया, या जैसा था वैसा ही उनको चलचित्र में डाल दिया? So in collecting these memories, I rely a good percentage on Paramatma. And that is hearing the story and the storyteller, the sincerity and the detail that they give in that particular anecdote. तो मैं जब ये स्मृतियाँ बना रहा था, मैं गंभीरता से सुन रहा था कि कितना सिंसियरली, कितना गंभीरतापूर्वक वहाँ ये स्मृतियों का स्मृति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और एक-एक डिटेल के बारे में चर्चा कर रहे हैं। But in the same vein, to show that a particular story is true, many times another devotee will tell the same story. बहुत बार ऐसा होता था कि अलग भक्त वही सेम चर्चा, वही सेम जो घटना हुआ था उसके ऊपर चर्चा करते हैं। So that is why I include that same story in another section of the collection. So there's verification there. I could say as an author that, oh, I already told that story. But I knew for the same reason you're pointing out that this gives evidence that has been verified, maybe told in a slightly different angle of vision, but the purport is the same. तो जब एक ही कहानी की चर्चा, एक ही घटना की चर्चा दो अलग-अलग शिष्य के द्वारा होती थी, तो मैं ऐसा नहीं करता कि एक ही बार ये चर्चा अपने वीडियो में बताऊंगा। मैं दोनों बार ये चर्चा अपने वीडियो में बताऊंगा ताकि इसका पुष्टिकरण हो पाए कि ये जो प्रभुपाद के शिष्य बता रहे हैं वो एकदम सही है। Now, on that same vein, there are a number of times after I recorded the video and printed the books that I found out that the story was not true. And once it was revealed to me, Krishna has a way of revealing things. So I have taken that story out of the video and I took it out of the book. If and when it's reprinted, it will not be repeated. And even elevated, advanced devotees might tell a story, and you could think, how could that story not be true? And in fact, one of our Prabhupada's greatest, Prabhupada had so many great disciples. One is Shamashundar.
And sure enough, one of his stories was verified not to be true. तो कई बार ऐसा भी होता था कि प्रभुपाद जी के शिष्य जो घटना बताते थे वह घटना सही नहीं होता था, और जब मुझे यह बात पता चलता था तो मैं अपनी जो वीडियो है वो वीडियो से जो घटना डिलीट कर देता था, और जो पुस्तक है उसको रिप्रिंट करता था जब तब वह घटना नहीं रखता था। और एक बार ऐसा भी हुआ कि प्रभुपाद जी शिष्य है मेरे शिष्य श्याम सुंदर प्रभु, उन्होंने जो घटना का चर्चा किया वह भी सही नहीं था। Another time, a devotee named Yasodanandana, he was a sannyasi at one time, and he described how during Madhavisa Swami's sannyas initiation in LA, that Prabhupada was dancing and leaping higher than he could leap. And he was 6'4", strong young guy. And so I'm thinking, did Prabhupada really jump that high? तो एक बार ऐसा हुआ कि प्रभुपाद जी शिष्य थे, वहाँ ये घटना के बारे में चर्चा कर रहे थे कि एक बार संन्यास विधि के समय, संन्यास जो संस्कार होता है उनके समय प्रभुपाद ने हाथ उठा के इतना जोर से छलांग लगा रहे थे जितना मैं भी नहीं लगा पा रहा था, वो शिष्य से बता रहे थे। तो मुझे यह समझ में आ रहा था कि क्या ये घटना सही हो सकती है। So sadly, that particular story was printed. No, actually it wasn't printed in the books yet, but I had taken it out because I was personal friends with Madhavisa. And I said, Madhavisa, did Prabhupada jump that high? And Madhavisa said, no, he never jumped that high. जब मैं यह घटना का चर्चा है वहाँ पुस्तक में डालने वाला था, मेरे को जो सन्यासी थे जिनका नाम था माधवीशा, उनको व्यक्तिगत जाके पूछा कि प्रभुपाद ने क्या इतना जोर से छलांग लगाई थी। तो माधवीशा जो महाराज जी हमें बताया नहीं, इतना जोर से तो छलांग नहीं लगाई थी। So it's a detail, but with some exaggeration. But I took it out anyway, because someone might think that physically couldn't be. Prabhupada was, as short as I am, and he's going to leap as I. So it sounds far-fetched. Do you know the word far-fetched? तो कई बार ऐसा हो सकता है कि बारीकियों में मतभेद हो सकता है, और जो शिष्य है वो थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हो, क्योंकि प्रभुपाद जी वो सन्यासी जो थे उनके कंधे तक की उनकी हाइट थी, तो क्या उतना वो बड़ी छलांग लगा पाएंगे। Within the last year, I interviewed this Mataji, and she was in London, and she told me a story about after the Krishna book was printed, that George Harrison came to Kensington Hall to present the Krishna book to Srila Prabhupada. कृष्ण बुक छपने के बाद यह तब की घटना है जब जॉर्ज हैरिसन प्रभु श्री प्रभुपाद जी के पास व्यक्तिगत रूप से आए और उनको कृष्ण पुस्तक गिफ्ट कर रहे थे, भेंट कर रहे थे। Now, as she was telling me this story, in my mind and in my heart, I'm thinking, I've never heard that story. And so, because of my doubt, then I interviewed Mukunda Goswami, Shamashundar, Guru Das. Did I say Mukunda? So, these are other personalities that would have verification of that happening, and because they could not verify it, they said, no, that did not happen. And Shamashundar looked it up on Google. Did George Harrison go to Kensington Hall? And not even the Google machine could find that that was the case. तो जब मुझे पता चला कि घटना के बारे में पता चला कि जॉर्ज हैरिसन व्यक्तिगत रूप से कैंडिडेट और गए थे प्रभुपाद जी को यह पुस्तक भेंट करने के लिए, तो मैंने मुकुंद गोस्वामी, श्याम सुंदर प्रभु और गुरुदास जो प्रभुपाद जी के करीबी शिष्य थे उनसे ये पुष्टिकरण किया, और उन तीनों ने बताया कि ऐसा कोई घटना तो है नहीं। और गूगल पे श्याम सुंदर प्रभु ने टाइप करके देखा, वहाँ पे भी कोई ऐसा घटना नहीं था। So, I am not perfect. I have imperfect senses and I have the tendency to make mistakes. And sure enough, in my books there are typos. Names are spelled wrong. Maybe commas are not in the right place. And so these things will be fixed for the next printing. As Srila Prabhupada also wanted his books fixed properly,
not change the philosophy, but to make it presentable with the proper semantics and grammar. तो मैं शुद्ध पुरुष नहीं हूँ, मेरी इंद्रियाँ भी अपूर्ण है और मुझसे भी गलतियाँ हो सकती है। तो ऐसा हो सकता है कि पुस्तक में कुछ पूर्ण विराम या अलग ग्रामर मिस्टेक हो सकती है, तो मैं अपनी नेक्स्ट छपाई में उसको करेक्ट करने का प्रयास करूँगा। Does that answer a little bit? Any other questions? Comments? I'll tell you another little story then. And it's a small incident, but it's an incident that is a small lesson too, but it's something that you won't hear in a Bhagavatam class or a Gita class that Prabhupada gave. So the importance of these stories are significant for our benefit. It's an education. मैं एक छोटी सी घटना के बारे में अपनी चर्चा करूंगा, जो श्रील प्रभुपाद हम देखते हैं कि भागवत कक्षा दे रहे थे और गीता कक्षा दे रहे थे, तब ये छोटी-छोटी घटना के बारे में श्रील प्रभुपाद चर्चा करते थे। Now, also as a preface, and maybe in addition to what your question was, when I'm collecting these stories, and a devotee might say, well, in 1971 or 72, maybe they're not sure. I said, that's fine. This is not a book or video that is focusing on dates, to be exact. This is not a Leelamrita type of book. It's not a biography. तो कभी-कभी जब मैं इंटरव्यू लेता था, तो प्रभुपाद के शिष्य कंफ्यूज होते थे कि 1971 में 1972 में हुई घटना थी। तो मैं उनको बताता था कि ये जो पुस्तक है, वहाँ एकदम जो बारीक किया है, उसमें दिनांक का इतना हमने निश्चित नहीं किया है। The critical thing is the lesson to be learned. And if someone says, well, that really didn't happen in 1971, it was really in 72, does not negate the significance and the purport of that story. तो एक बार श्री प्रभुपाद की शिष्य स्मृतियाँ की चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बताया कि यह जो घटना है वो 1971 में हुई थी, पर जब मैंने यह घटना के बारे में जाना, मुझे पता चला कि यह घटना 1971 में न होकर 1972 में हुई थी। So on an airplane, Srila Prabhupada was flying, and the typical regimen for Prabhupada flying on an airplane was that the temple where he was flying from, they would fix a nice tiffin with Mahaprasad for Srila Prabhupada to honor. तो यह तब की बात है जब भी श्री प्रभुपाद जी एयरप्लेन विमान में जब उड़ते थे, तो उनके साथ एक टिफिन का व्यवस्था रहता था जिसमें महाप्रसाद रहता था। So this one particular flight, and again the importance of where he was flying from or to are not significant, but the story is that typically, and Shruti Kirti has told me this many times, that the regimen was that as soon as they take off, Srila Prabhupada would say, Prasad, and then his servant would get out the tiffin and serve Srila Prabhupada, and then after Prabhupada would eat, then he would offer it to his servants. तो ये तब की बात है कि श्री प्रभुपाद एक बार हवाई जहाज से यात्रा कर रहे थे और उन्हें जैसे हवाई जहाज उड़ना शुरू किया, तो उन्होंने अपने जो सर्वेंट थे, जो शिष्य थे, उनसे पूछा कि कहाँ है प्रसाद, और उन्होंने प्रसाद प्राप्त करके वापस वहाँ जो उच्चिष्ट थे अपने जो सर्वेंट थे शिष्यों को दे दिया वापस। So his servant was behind Srila Prabhupada in the rows in the airplane. And when Srila Prabhupada finished honoring prasadam, he took out a toothpick, which he normally did. And the servant behind him saw that Srila Prabhupada was using a toothpick. तो जब श्री प्रभुपाद ने प्रसाद प्राप्त किया, तो सामान्य घटना है कि श्री प्रभुपाद प्रसाद लेने के बाद एक टूथपिक लकड़ी का यूज करते थे अपने दांत में कचरा फंसा है उनको निकालने के लिए। तो वो जो शिष्य लोग पीछे से देख रहा था, श्री प्रभुपाद लकड़ी उपयोग कर रहे हैं। So the servant, seeing that, thought to himself, oh,
I'm taking a cue, that's my cue, that I should go brush my teeth. So he had his little shaving kit there, and he started to get up to go to the restroom to brush his teeth, because he was seeing Prabhupada's the Acharya. He's the Acharya for everything. What to speak of cleaning his teeth. तो जब उन्हें शिष्य ने देखा कि प्रभुपाद जी दांत साफ कर रहे हैं, तो उनको भी समझ में आया कि मुझे भी अपने दांत साफ करने चाहिए। अपना सेविंग किट उठाया और पीछे चले गए दांत साफ करने के लिए। Srila Prabhupada looked back, he said, "Where are you going?" श्रील प्रभुपाद पीछे मुड़े और अपने शिष्य को बताया कि आप कहाँ जा रहे हैं? Oh, Srila Prabhupada, I'm going to brush my teeth. I saw that you sit down. तो शिष्य ने प्रभुपाद ने देखा कि दांत साफ कर, तो मैं भी अपने दांत साफ करने जा रहा था। तो शिष्य ने बताया कि बैठ जाओ। I'm using this toothpick to get every last morsel of Mahaprasad, so I don't waste any prasad. तो श्री प्रभुपाद ने बताया कि मैं यहाँ जो लकड़ी है वो इसलिए उपयोग कर रहा हूँ ताकि एक भी जो प्रसाद कण है वो वेस्ट ना हो और मैं उसको प्राप्त कर सकूँ। So, who knew Acharya comes down and teaches us? He's the prophet that you brush your teeth before you eat. And to get every last, he saw Krishna in every morsel of prasad. So what a lesson. A simple lesson, but a lesson indeed. तो आचार्य हम कहाँ पे ऐसे आचार्य मिलेंगे जो हर एक बारीक क्या सिखा रहे हैं कि प्रसाद ग्रहण करने से पहले हमें अपना दांत साफ करने चाहिए और प्रसाद प्राप्त करने के बाद हमें पूरा प्रसाद अच्छे से दांतों से निकाल के प्राप्त करना चाहिए। Another story on an airplane. They were flying, pushed to Krishna. At that time, Maharaj told me that they were flying, and they were flying from somewhere to somewhere. But the point is that on the airplane, there were a bunch of rowdy, either rugby or soccer players. You call them football, maybe, right? तो एक बार श्री प्रभुपाद हवाई जहाज में यात्रा कर रहे थे और कृष्ण प्रभु उनके साथ भी यात्रा कर रहे थे और वहाँ हवाई जहाज में बहुत सारे फुटबॉल प्लेयर भी थे। And they were at this time in the history of aviation, it was allowed to smoke cigarettes. They still drink alcohol, but at that time, these football players were being very rowdy because they were drunk and they were smoking cigarettes, and the smoke was in the same vicinity as Srila Prabhupada. तो ये तब की बात है जब हवाई जहाज में सिगरेट पीना अलाउड था और ये जो सिगरेट पी रहे थे सब लोग उनका धुआं प्रभुपाद की ओर आ रहा था। So Krishna went to the stewardess, they call them flight attendants now, and said, "Could you please tell them to settle down and not be so rowdy, and the smoke is bothering my guru." So she said, "Okay." तो जहाँ वहाँ पे जो कृष्ण प्रभु वहाँ पे जो हवाई जहाज में आके जो नौकरी कर रहे थे फ्लाइट अटेंडेंट बोलते हैं जिनको उनके पास गए और बताया कि आप इनको ये सब सिगरेट पीने से रोक सकते हैं क्या? So she told the rowdy bunch to please calm it down and to put out their cigarettes, and they did for a little while, but then a few minutes later they became rowdy again. तो जब फ्लाइट अटेंडेंट ने सबको शांत किया कि आप सिगरेट पीना बंद कीजिए, तो उन्होंने 2 मिनट के लिए सिगरेट पीना बंद किया, फिर वापस अपना जो व्यवहार है वहाँ प्रारंभ कर दिया। So Krishna got up again to tell the stewardess, to remind her again to please tell them to stop. As he got up, Srila Prabhupada, "Sit down, where are you going?" "I'm going to tell you," he said, "if we cannot tolerate these little things in life, what is the difference between them and us?" जब कृष्ण प्रभु वापस वहाँ हवाई जहाज चालक के जो नौकर थे वहाँ पे पास जा रहे थे, तो उन्होंने कृष्ण प्रभु को रोक लिया और उनको उपदेश दिया कि अगर ये छोटी-छोटी चीजें अपने जीवन में सहन नहीं कर सकते, तो हम उनके बीच में और हमारे बीच में क्या अंतर है? Another push to Krishna story, again on an airplane. He described how the air turbulence was so rough that the airplane
took a dive and lost elevation maybe 10,000 feet in a very limited amount of time. And he was very scared. तो एक कृष्ण प्रभु एक और घटना बता रहे थे कि जब वो यात्रा कर रहे थे तो एक बार ऐसा हुआ कि हवा का प्रवाह वायु का प्रवाह इतना जोरदार था कि एरोप्लेन 10,000 फीट नीचे आ गया तुरंत. After it leveled out and finally it was calm again, he went, Puja Krishna went up to where Srila Prabhupada was sitting towards the front, and Puja Krishna asked Srila Prabhupada, "Are you okay?" And Srila Prabhupada said, "Yes, we can die at any moment." तो जब वहाँ हवाई जहाज की गतिविधि शांत हुई तो कृष्ण प्रभु श्री प्रभुपाद के पास गए. उन्होंने प्रश्न पूछा कि आप ठीक है श्री प्रभुपाद? श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हाँ मैं ठीक हूँ, हम किसी भी समय मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं. I'll tell one more story and then maybe call it a night. This is a story told by Narayan Prabhu, who left his body 7-10 days ago. Narayan was called Srila Prabhupada not only initiated him as Narayan, but he deemed Narayan to also have the title of Vishvakarma, because he was a great builder. Narayan helped Jayananda Prabhu build the first Rath Yatra carts. तो यहाँ पे जो घटना चर्चा करने जा रहा हूँ वो नरेंद्र नारायण प्रभु के द्वारा बताई गई है. उन्होंने 7 से 10 दिन पहले ही अपना शरीर त्याग किया है और नरेंद्र नारायण प्रभु ने बहुत अच्छी सेवा की है. उन्होंने जयानंद प्रभु को पहले रथ तैयार करने में खूब सहयोग किया था. So again, these are very early days, late 60s. Excuse me. And Narayan had just joined the temple. And he said that somehow or another he found himself in Srila Prabhupada's room. Just he and Srila Prabhupada were there. And that somehow or another, Narayan got on the other side of Prabhupada's desk and Srila Prabhupada was on the other side. तो ये बहुत पहले की घटना है जब नरेंद्र नारायण प्रभु ने जस्ट मूवमेंट ज्वाइन किया था 1960 करीब. तो वहाँ एक रूम में श्री प्रभुपाद और नरेंद्र नारायण प्रभु ही बैठे थे और नरेंद्र नारायण प्रभु श्री प्रभुपाद की जगह जाके बैठ गए और श्री प्रभुपाद तब नरेंद्र नारायण प्रभु यही उनकी जगह पे जाके बैठ रहे थे. So Srila Prabhupada said to Narayan, pointing to his desk, he said, "Do you see this ant? A-N-T, ant. Do you see this ant?" तो श्री प्रभुपाद वहाँ पे नरेंद्र नारायण प्रभु से चर्चा कर रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या आप ये चीटी को देख सकते हो जो मेरी डेस्क पे है. And Narayan told me, he said, "Well, I looked down and there was no ant there." नरेंद्र प्रभु बोले कि मैंने जब देखा वहाँ पे कोई चीटी थी नहीं. So again, Prabhupada said, "Do you see this ant?" And Narayan didn't want to appear to be a liar and say yes, and then to be found out that there was really no ant there, that he could not see. And at the same time, he didn't want to say no and be found out to be a fool. So he said, in a combination of yes and no, he said, "Yeah." तो वहाँ समझ नहीं पा रहे क्या उत्तर दे. अगर हाँ में जवाब देते तो वो झूठे साबित होते क्योंकि वो देख नहीं पा रहे चीटी ना वहाँ पे नहीं है. और ना में उत्तर देते तो वहाँ श्री प्रभुपाद के सामने एक मूर्ख प्रदर्शित होते. तो उन्होंने हाँ और ना के कॉम्बिनेशन में जवाब दिया. So after that interchange, and Prabhupada then said, "You see this ant? If we can just feed this one little ant a morsel of prasadam, then our entire movement is a glorious success."
प्रभुपाद जी प्रभु जी बता रहे हैं कि क्या आप ये चीटी देख सकते हैं? अगर हम ये चीटी को एक दाना भी खिला दे तो हमारी पूरी जो मूवमेंट है वो सफल हो जाएगा। So later on, Narayana realized that that was an analogy that anything we can do to make even one person Krishna conscious, then that will be to our success and to the world, the benefit of the world. तो वहाँ पे प्रभु जी बता रहे कि जब छोटी छोटी भी सेवा करते हैं प्रभुपाद जी की मूवमेंट में तो वह सभी जीवों के प्रति लाभकारी होगी। I was actually on a morning walk with Prabhupada in Denver, Colorado, and the topic of prasadam came up. Prasadam. तो यह तब की घटना है कि श्री प्रभुपाद के पास कोई प्रसाद लेके आया था। In the same vein as the previous ant story, Srila Prabhupada described the prasadam as so powerful that even if you feed an animal, any species of life, prasadam, in their next life, they jump over all the other species and take human form in their next life. तो वही घटना को वापस हम दोहरा रहे कि प्रसाद में इतनी शक्ति है अगर हम चींटी को भी ये प्रसाद खिलाते हैं तो वह दूसरी योनियों में न जाके डायरेक्ट उनको मनुष्य योनि प्राप्त होगी। I always said that I'll just tell one more, but I'll tell two more. Is everybody okay? You bored? Okay. Again, to show Srila Prabhupada's wit and his cutting-edge ability to preach. In Texas, they had, Srila Prabhupada was there in Dallas, and they wanted, as Prabhupada often liked, to have people of the community, scientists, religionists, professors, different walks of life, and come have a discussion with Prabhupada. तो यह टेक्सास घटना है प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे थे और जब भी प्रभुपाद चर्चा करते थे सभा में तो वो चाहते थे कि अलग-अलग जो दार्शनिक थे साइंटिस्ट फिलोसोफर वो उनके सामने चर्चा करें। So the devotees knew that there was a scientist in the community, and not really coming to the temple often, but they knew of him, and they called him up and asked him to come take darshan with Prabhupada. तो वहाँ यह तब की घटना है कि एक जो दार्शनिक है साइंटिस्ट है वहाँ दर्शन लेने नहीं आते थे मंदिर में और पहली बार दर्शन लेने आए थे प्रभुपाद जी के। So the scientist was in front of Prabhupada, and Prabhupada, always very cordial, asking him questions, what's your name, what do you do? And the man said, well, I'm a scientist. And Prabhupada said, oh, what kind of scientist? And the man said, well, we do experimentations on animals. तो यहाँ घटना में प्रभुपाद जी को सामान्य बात करते हुए उन वैज्ञानिक से व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे कि आप कैसे हैं, आपका नाम क्या है और आप क्या कर रहे हैं। तब वो वैज्ञानिक उत्तर देते हैं कि मैं पशुओं पर रिसर्च एक्सपेरिमेंट करता हूँ। And Prabhupada said, oh, what kind of animals? The man said, well, we experiment mostly on cats. तो प्रभुपाद जी उनको प्रश्न पूछा कि कौन सी तरह के पशुओं पे आप रिसर्च करते हैं। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि हम सामान्य रूप से जो बिल्ली है उनके ऊपर विज्ञान करते हैं। Prabhupada said, oh, all animals don't get a chance. तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि बाकी पशुओं को आप चांस नहीं देते। And that's all it took. All animals don't get a chance. 6 words made him shrink down and become more contemplative of the nature of his business in killing cats. तो ये जो 6 शब्द थे कि बाकी पशुओं को चांस नहीं मिलता, बाकी पशुओं को अवसर नहीं मिलता, तो वैज्ञानिक को समझ में आया कि मैं कैसा व्यवहार कर रहा हूँ।
मैं कितने पशुओं पे दुराचार कर रहा हूँ और हत्या कर रहा हूँ। Excuse me. So, the use of sarcasm in that case was very appropriate. And that, depending on the individual that we're maybe having a discussion with, it's not appropriate. Sometimes Prabhupada will say, I'm an old man, I can say like this, but you cannot. तो वहाँ पे हम देखते हैं कि शब्दों का जो उपयोग है प्रभुपाद जी ने कैसे किया, और प्रभुपाद जी कहते थे कि मैं ऐसे चर्चा कर सकता हूँ, वैज्ञानिक के साथ प्राप्त चर्चा नहीं कर सकते। And one last story to give you evidence of the potency of following Srila Prabhupada, following this practice of Bhakti Yoga, chanting Hare Krishna. And as I discussed at the beginning of the class, how we can judge our own advancement by the qualities that we develop in our own life. There's actually a barometer, how we can see that yes, I am becoming happier, I'm becoming more friendly, I'm becoming more compassionate, etc. 26 qualities of a Vaishnava. Prabhupada, when he was asked on a radio station, how would I know if I meet a Vaishnava? And Prabhupada said he would be a perfect gentleman. So with that in mind, Guru Kripa Prabhu, very passionate disciple of Prabhupada, he collected thousands of dollars to build Vrindavan, Krishna Balaram temple. So, okay. कई बार ये प्रश्न आता था कि हम जब भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं तो कैसे पता चलेगा कि हम कितना प्रगति कर रहे हैं और कितने वैष्णव गुण, जो 24 वैष्णव गुण हैं उसमें कितने वैष्णव हमारे नए हैं। तो प्रभुपाद जी उत्तर देते हैं कि जो वैष्णव है परफेक्ट जेंटलमैन, जो वैष्णव है उनका जो व्यवहार है और बहुत आदर्श जो व्यक्ति है उनके द्वारा जैसा व्यवहार रहता है वैसा उनका व्यवहार रहता है। Wow, well done. Huh? Again. What a brain Krishna gave him to do that. It's a talent. So anyway, in the early days, before he took sannyas later on, but in the early days, he was in the southern part of India, making life members. And they would generally go to CEOs, the presidents of big corporations. तो ये तब की घटना है कि जब प्रभुपाद जी शिष्य थे अलग-अलग बड़े लोग बड़े व्यक्ति के पास जाते थे लाइफ मेंबर बनाने के लिए, बड़ी-बड़ी कंपनी के सीईओ उनसे मिलने जाते थे। So this one afternoon, he had made an appointment with the president of a big corporation and laid out the presentation of Prabhupada's books, the benefit of becoming a life member. तो यहाँ घटना में हम देखते हैं कि वहाँ एक व्यक्ति के पास जाते हैं जो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है और उनके पास जाके सारी श्री प्रभुपाद की पुस्तकें रख के उनको समझा रहे होते हैं। And in the office, not only was the president there, but a couple of his friends. And one of the gentlemen started to argue, or he made a comment to Guru Kripa that, oh, I've read the Bhagavad Gita, and actually it's Karna who is the hero of the Bhagavad Gita. तो वहाँ कंपनी में एक व्यक्ति था, वहाँ टिप्पणी कर रहा था कि हाँ मैं भगवद गीता पढ़ा है और उसमें मुझे पता है कि कर्ण जो है वही आदर्श योद्धा है। And Guru Kripa said, no, it's not Karna. Arjuna is the hero. और गुरु कृपा को बताते हैं कि कर्ण नायक नहीं है वहाँ पे, अर्जुन नायक है। And the man argued back, no, of course it's not. It's Karna because such and such a reason. And Guru Kripa said, no, it's Arjuna. तो वो व्यक्ति हठपूर्वक बार-बार यही प्रदर्शित कर रहा था, नहीं कर्ण नायक है। और गुरु कृपा प्रभु बार-बार को समझा रहे थे कि नहीं कर्ण नायक नहीं है, अर्जुन नायक है। And they started getting into a heated argument. And Guru Kripa started to get angry. और वहाँ बहस में उतर गए और गुरु कृपा प्रभु को गुस्सा आने लगा। So the man said, what good has this guru done for you that you're arguing like this? तो वो व्यक्ति गुरु कृपा प्रभु बताते कि आपके गुरु ने आपके क्या किया है जो आप इतना बहस कर रहे हो उनके लिए मेरे साथ?
Guru Kripa said, well, a year ago I would have punched you in the face. ये तो कुछ नहीं, मैं तो आपको मुंह पे मुक्का ही मार देता। So that's how he judged that he was actually making advancement, even though he was arguing. But Guru Kripa was like that. He was a real street fighter man before he joined Prabhupada's movement. Anyway, thank you for listening, and I appreciate the time. No question? So, my question is that Okay, so say it for everybody. तो इनका प्रश्न है कि हम जब कृष्णा पुस्तक पढ़ते हैं तो उसमें जॉर्ज हैरिसन प्रभु का नाम आता है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रभुपाद जी ने इतनी आसानी से कैसे जॉर्ज हैरिसन प्रभु को कन्विंस कर दिया 5000 पुस्तक छपवाने के लिए। His question is that when I read Krishna book, I see the name of George Harrison is written there. So I don't know how Srila Prabhupada convinced George Harrison Prabhu to print those all Krishna books. He wants to know how it came to be that George Harrison donated the money. Yes. Do you all know this story? Okay, I'll tell it. Got 10 minutes here. It's a little involved, but it's worth it. In the late 60s, Shamashundar, Malati, Mukunda, what's Mukunda's wife? Janaki, thank you. Jamuna, Guru Das, the 6 of them went to the UK for the express purpose of getting the Beatles to become Krishna conscious. They wanted to, as Shamashundar says in his book, shoot for the rhinoceros. तो यह घटना श्यामचंद्र प्रभु अपने जो शूट फॉर द राइनोस उनमें ये घटना का वर्णन आता है कि 1960 की घटना है। मालती माता जी और श्री प्रभुपाद जी जो अन्य शिष्य है, 6 शिष्य है, और जॉर्ज हैरिसन प्रभु के पास जाते हैं कृष्ण भक्ति के प्रचार के लिए। So they did go there, and Prabhupada, or they asked Prabhupada, how should we approach them? And Prabhupada said, just give them everything. Just give them prasadam, give them books. Don't ask for anything. तो वंशले प्रभुपाद से चर्चा कर रहे थे कि प्रभुपाद हम कैसे जॉर्ज प्रभु को प्रचार करें। तो प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि आपको सब दे दीजिए, पुस्तक दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, और उसके बदले कुछ मांग नहीं कीजिए। And so they did that, and they became close. And they actually even at a time sat in on some of their recording sessions. तो उन्होंने वही किया और उनके साथ बहुत अच्छा संबंध स्थापित हो गया और उन्होंने कुछ चलचित्रों का भी निर्माण किया साथ में। But it came to the time when Prabhupada had written the Krishna book, but didn't have the funds to print the book. And so he asked Shamashundar to come to his room. तो ये तब की बात है कि जब श्री प्रभुपाद ने कृष्ण पुस्तक लिखी थी, पर उनको छपाने के लिए श्री प्रभुपाद के पास कोई राशि नहीं थी, तब उन्होंने श्यामचंद्र प्रभु को अपने रूम में बुलाया। Shamashundar came in and Srila Prabhupada explained the situation that the Krishna book was ready to print. It had been for months, but there was no funds in the BBT to print it. श्यामचंद्र प्रभु श्री प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्ण बुक छपने के लिए तैयार है महीनों से, पर हमारे पास कोई राशि नहीं है छपवाने के लिए। So Prabhupada said to Shamashundar, I want you to go ask George for the money to print the book. And it is $19,000 to print the book, which at that time was a lot of money. श्री प्रभुपाद जी श्यामचंद्र प्रभु को आदेश देते हैं कि आप जॉर्ज हैरिसन प्रभु के पास जाइए और उनसे ये राशि मांग कीजिए, $90,000। ये बहुत बड़ी संपत्ति है उस समय में। Shamashundar put his head down and said,
Oh no, Srila Prabhupada, I don't think that's a very good idea. श्याम सुंदर प्रभु अपना सर नीचे रख के प्रभु जी को बताते हैं कि ये बहुत अच्छा युक्ति नहीं है, बहुत अच्छा विचार नहीं है। He said, we've made friends with them, we've done what you said, just give them everything, and we're now friends, and now you want me to ask for money? They'll think that we're just another group out for some material gain. तो आपने मुझे पहले बताया था कि आप जॉर्ज प्रभु को सब दे दीजिए और उनसे कुछ मांग लीजिए, और अभी आप ही बता रहे हैं कि उनके पास जाके $90,000 मांग दीजिए। तो अभी हम अच्छे मित्र हो गए हैं, तो उनको अभी ऐसा लगेगा कि हम भी दूसरे भौतिकवादी की तरह ही हैं, जो पहले मित्र बनते हैं और फिर पैसों की मांग करते हैं। Prabhupada said, don't worry, Krishna will help you, you'll see. प्रभुपाद जी बताया कि आप चिंता मत करें, कृष्ण की सहायता करेंगे। So Shama Sundar got the order from the guru. What's he going to do? Say no to him? So he went out with that mission on top of his mind. तो श्याम सुंदर प्रभु गुरु को नाराज नहीं करना चाहते, उनको ना नहीं बोलना चाहते थे, इसलिए वहाँ हम मिशन को कंप्लीट करके गए जॉर्ज प्रभु के पास। So Shama Sundar, 1 or 2 days later, went with George Harrison and a man named David Wynne, who was the sculptor laureate of the UK. He made the Queen's bust and all the Beatles bust, a well-known sculptor. And they had gone out that day to George Harrison and David Wynne with Shama Sundar bought a 5,000-pound slab of marble for the altar at the manor. तो यहाँ घटना में ऐसा होता है कि श्याम सुंदर प्रभु जॉर्ज प्रभु के पास जाते हैं और डेविड विन नाम की व्यक्ति से मिलते हैं, जो उनकी जो भी बीटल्स की जो बसें थी उनके ऊपर चित्र बनाने का कार्य करते थे, और वहाँ पे 5,000 और वहाँ पे बहुत सारे मार्बल पड़े हुए थे जब वहाँ पे गए श्याम सुंदर प्रभु को। So after they purchased the marble, they went back to David Wynn's house to have dinner. At which time Shama Sundar, while he was eating, was thinking, how am I going to ask George for $19,000 after he's already spent all this incredible amount of money just to buy this marble for the deities? तो अभी जैसा हम सोच रहे थे कि अभी मैं जो अच्छा विग्रह है उनके लिए इतना सारा मार्बल परचेस करके आया हूँ उनके साथ, अभी मैं और 90,000 कैसे मांगूं? So after dinner, it was late at night, and after dinner, Shama Sundar got George off to the side by themselves. And Shama Sundar decided he was going to make Srila Prabhupada the bad guy. तो वहाँ पे जब वो साथ में बैठे हुए थे, श्याम सुंदर प्रभु विचार करते कैसे उसे मांग करें 19,000 की, तो उन्होंने सोचा कि सब कुछ श्रील प्रभुपाद के नाम पे बता देंगे। So he said to George, George, Srila Prabhupada asked me to ask you that if you could help print the Krishna book. And he went on explaining what the Krishna book was about. तो उन्होंने ऐसे वर्णन करते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने मुझे बताया है आपसे बताने के लिए कि जो कृष्ण पुस्तक है वहाँ छपाने के लिए इतनी राशि की आवश्यकता है। I'm going to take these glasses off to show you this. So at the end of his describing what the Krishna book was, Shama Sundar said, and it cost $19,000. And as soon as Shama Sundar told him the price, he could see George's eyes. I don't know if you can see in the back. George's eyes went in the top of his head like, oh my God, here's just another one of these guys. Another group that just want my money. तो जब श्याम सुंदर प्रभु ने 19,000 की मांग की, तो हम देख सकते हैं कि जॉर्ज जैसे प्रभु सोच रहे थे कि ये और भौतिकवादी युक्तियों की तरह ये भी है जो राशि के पीछे पड़े हुए, राशि के पीछे पड़े हुए और मेरे पास आए हैं। Just at that moment, at that very moment when George was rolling his eyes in disgust, a bolt of lightning and the thunder was simultaneous that hit the house, and all the lights went out. तो
जब जॉर्ज जैसे प्रभु ऐसे आंख घुमा रहे थे तो तभी बहुत जोर से बिजली कड़की और उनके घर के ऊपर ही गिरी और सारी जो लाइट्स थी वो बुझ गई। You know, when we see lightning, and then we count 1, 1,000, 2, 1,000, 3, with determine how many miles away the lightning appeared is to where we're standing. तो हम जब बिजली कड़कती है हम देखते हैं और हम नापने का प्रयास करते हैं कितना दूर ये बिजली कड़की होगी, 1,000 माइल, 2,000 माइल, 3,000 माइल। But this visual of the lightning and the thunder was simultaneous. Struck the house for 10 minutes, and they didn't say a word during that silence. They just stood there in darkness. पर ये जो बिजली कड़की वो 10 मिनट तक लगातार कड़की और उनके ही घर के ऊपर कड़की और बहुत जोर से आवाज आ रहा था और 10 मिनट के लिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे। After 10 minutes, the lights finally came on in the house. And George then said to Shama Sundar, well, how much was it that you say? 10 मिनट के बाद बिजली वापस आई, घर की बिजली वापस आ गई और जॉर्ज से प्रभु श्याम से प्रभु बताते हैं कितना राशि चाहिए था आपको? So George Harrison was a true bhakta. He was a devotee of Krishna, no doubt about it. And he got the message directly from Krishna. And so he donated the money straight away. जॉर्ज जैसे प्रभु भगवान के सच्चे भक्त थे और उन्होंने कृष्ण का डायरेक्ट संदेश प्राप्त किया बिजली के रूप में। हम देख सकते हैं हमने राशि जमा कर दी श्याम प्रभु को। Srila Prabhupada ki jai. Thank you for listening. Appreciate it. श्रीमान सिद्धार्थ प्रभु की